The topic we are going to discuss about is chemical bonding. And the subtopics are atomic radius and ionization energy. Now the question arises, why do atoms bond? Atoms usually bond to complete their octet or doublet और either to become stable. जब भी atoms आपस में bond बनाते हैं तो वो stable हो जाते हैं क्योंकि इनकी energy जो है वो कम हो जाती है. So here you can see कि जब भी दो hydrogen atoms आपस में bond बनाने के लिए they come closer, उनकी जो attractive forces हैं वो dominate करती हैं and hence they form bond. जहां पे उनकी repulsive forces dominate करेंगी वहां पे atoms bond नहीं बनाएंगे. जब आपकी एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी दे विल फॉर्म अ बॉन्ड. उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो कोई भी चीज तब स्टेबल होती है जब वो लो एनर्जी पे होती है. जब आप हाई एनर्जी पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे वो मजीद रिएक्टिव हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एटम्स बिकम स्टेबल और जब भी एटम्स ने बॉन्ड बनाना है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है. और अगर उनकी रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करती तो एटम्स कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे. Let's define atomic radius. Atomic radius is the measure of the size of an atom. It is the measure of distance from the center of nucleus to the outermost isolated electron. So here half of the distance between the two nuclei is known as atomic radius. If we talk about its trend in periodic table within a group, it increases क्योंकि हर successive period में एक एक shell increase होता जाता है. While in a period it decreases क्योंकि nuclear force electrons पे ज्यादा होती जाती है जिसकी वजह से वो shell है वो shrink कर जाता है. Next is ionic radius. When a neutral atom loses electron या electrons वो एक cation बन जाता है. इस process में उसका size decrease हो जाता है. It sometimes loses outermost shell या second और imbalance electron proton ratio हो जाती है. So here you can see sodium atom larger size का है जबकि जो sodium ion है वो smaller size में. When a neutral atom gains electron या electrons it becomes an anion. इस process में size increase हो जाता है. Addition of one or more electron in the shell enhances repulsion between electrons causing expansion of the shell. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में जो साइज है शेल का वो इंक्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई जो क्लोरीन एटम है उसके मुकाबले में जो क्लोराइड आयन है उसका साइज बड़ा होता है. So what about its trend in periodic table within a group? Similar charged ion size increases. जबकि पीरियड में इनका साइज यूजुअली जो है वो डिक्रीज होता है. If we talk about the isoelectronic, here we have the graphical representation. You can see along a period lithium, then sodium, potassium, rubidium और cesium size जो है वो increase हो रहा है. Similarly for the negative ions भी size increase हो रहा है. लेकिन यहाँ पे we have neutral atoms और यहाँ पे we have cations. तो cations का size जो है वो neutral atoms की निस्बत कम है जबकि यहाँ पे we have neutral atoms and above them we have anions. So यहाँ पे anions का size जो है वो neutral atoms की निस्बत बड़ा होता है. So in this table you can see कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है जबकि व्हेन वी मूव फ्रॉम अबव टू बॉटम इन अ ग्रुप तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है. Let's discuss a question. Atomic radius of fluorine is only larger than that its period. Lithium, oxygen, nitrogen or neon, and the correct option is oxygen. Next is ionization energy. It is defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state. For example, sodium जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, it absorbs about 496 kilojoule per mole energy. So what factors affect ionization energy?
magnitude of nuclear charge, size of an atom, shielding effect. What is shielding effect? It is actually the repulsion due to electrons in between the nucleus and the outermost shell. So जितनी ज़्यादा repulsion होगी उतना ज़्यादा shielding effect होगा, जिसकी वजह से जो nuclear force है वो कम हो जाएगी. If we talk about its trend in periodic table, it decreases from top to bottom in a group. Why? क्योंकि nuclear charge increase हो जाता है, but उसके comparatively size of atom ज़्यादा increase होता है. Number of electrons causing shielding effect भी increase हो जाता है, जिसकी वजह से ionization energy कम हो जाती है. न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो रिमूव हो जाता है. So in this graph you can see when we move from top to bottom in a group, जो ionization energy की values है वो decrease हो रही है. लिथियम की सबसे highest है और सीजियम की सबसे कम. Next, in a period, it increases from left to right. Why? Outermost shell तो remain रहता है, वहां पे कोई और इंक्रीज या डिक्रीज उसमें नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफेक्टिवली इंक्रीज होता है क्योंकि प्रोटॉन्स ऐड हो रहे होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बट द शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट मच इफेक्ट. So here you can see कि ionization energy toward the end of the period वो increase होती है. जैसे हीलियम के सबसे ज्यादा है, सेकंड में नियॉन के सबसे ज्यादा है, देन आर्गन के सबसे ज्यादा है. Let's discuss a question. If the ionization energy of unknown element is very low, then the element is non-metal, metalloid, metal or semi-metalloid. And the correct option is metal, because metals की ionization energy सबसे कम है. These are group 1A elements. This was all about the ionization energy and atomic radius. I hope you have understood it well, and thank you so much.